here. The Honorable Chief Guest, eminent dignitaries, most revered Principal Ma'am, esteemed teachers and worthy guests. I, Ritika Singh and this Shreyasi Mukherjee welcome you all to our Vidyalaya for today's pious occasion of 78th Independence Day.
that was presented by our little children, I'm sure it has evoked the spirit of independence. Can we have a big round of applause for the children? And definitely for the music teacher too. A round of applause for the music teacher too. Honorable Chief Guest, the First Lady of the occasion, wife of our illustrious General Manager, come Chairman, School Managing Committee, Kusunda Area 6, Shri Pranav Das. Madam, we welcome you amidst us for gracing the occasion. Our sincere gratitude to you. Nostalgic moment to remember his school days. My all other delegates, esteemed faculty members, people from who are sitting here with a gleaming face, I welcome you all to the school campus and wish you all Happy Independence Day. Now, when we talk of independence, it's not just a gift. It's a responsibility that we all are carrying year after year. When it comes to the theme of our nation, if I quote the words of our Honorable Prime Minister, Viksit Bharat is the theme for 2000, making our nation in the list where the top nations have been placed. Future of the nation, we can all clap for ourselves and be proud to be an Indian. Can that clapping be a bit roaring? Itself a pride for us. When it comes to the achievements of the nation, India has achieved a remarkable stage in the space exploration. The Gaganyaan 2024 will be a gigantic leap of our country in the space. With D. Gugesh and R. Pragananda, the young development. Now, today since I'm here, I will also take the opportunity to brief the achievements of DAV Kusunda. I'm very proud to brief that, as usual, this year too, our students have added one more feather of glory. They have recorded CBSE Class 12 result with flying colors, and we have one student who made us proud not only in the district but also at the state level, and she is none other than Brishti Sigdar, who has set a benchmark with an exceptional 98.2% in humanities. So she has scored, definitely she deserves it. This is the highest ever score in the history of the school because she has made a position at the state level. We also have students like Arijit Maji, who has made an excellent score of 91% in science, and in commerce we have a remarkable 87% secured by Riya Kumari. Apart from it, in the class 10 result, Ankit Kumar has scored 95.5%, and nevertheless, this year in class 12, we have a few students with 100% marks. That means they have scored 100 out of 100 in economics and in painting. A big round of applause for the student and teacher both. Now of medical science and engineering, we have Harsh Kumar and Shanu Kumar who have qualified for the NEET 2024. We also have Sanu Jha, Abhishek Mandal, Kumari Muskan, Sakshi Kumari and Meena Kumari who have qualified for the JEE mains with remarkable percentage. Now let me come to the field of sports.
because DAV school or DAV institution has played a wonderful role in shaping up our young athletes. This huge number of students who will be participating and representing our DAV Kusunda, so that we also make a position at the zonal level. So from here, I would like to share one more important thought, that these players who were practicing throughout for the cluster level, despite of space constraint, time constraint, they kept on practicing. And applause for all the participants at the district level and those who made it to the zonal level. Constantly hurting me, and of course, it is a cause of concern for the entire nation. We all are aware of the incident that has rolled on. I will not refer to anything specific. The incident that has shattered in Arjikar College and Hospital, that shows we are celebrating independence, but the mind is not free from the bondages. My dear students and the entire gathering out here, on this Independence Day, let us take a vow just not to celebrate Independence Day for hoisting the flag and for having a few cultural programs on stage. Stand for the right. Let us unite and stand for equality, justice, and of course, we talk of women empowerment. We talk of women empowerment, but let it not be confined to the words. Let us raise above our level and learn to respect humanity, respect equally men and women both. Finally, the main goal of freedom is to embrace humanity. I am sure that my young generation who are sitting out here, they will embrace humanity, they will spread the message of love and the legacy of freedom that has been given to us, bestowed upon us by our freedom fighters. We will carry the legacy in a positive way and in the correct stride. With all these words, once again, I thank you all. Thank you, ma'am, for your precious words. We will make
कभी जो हम लावे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, परम आदरणीय प्राचार्य महोदया, पूजनीय शिक्षक वृंद एवं मेरे प्रिय साथियों। Today, as we gather to celebrate our 78th Independence Day, let's take a moment to breathe in the freedom that we often take for granted. We wake up each day in a country that is free, where our dreams are our own and our voices are heard. But this freedom wasn't handed us on a silver platter. It was fought for, sacrificed for, and earned by countless heroes whose names we may or may not remember. बच्चा बच्चा बन जाए सैनिक, अगर बुरी नजर दुश्मन डाले, हंसती उसके मिलाए खाक में, करे कभी जो हमलावे। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज से 77 साल पहले आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजी शासन की बेड़ियों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आज के दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत बलिदान को याद करते हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। In the present and the future, think about it. 78 years ago, on this very day, India was reborn. It wasn't just the transfer of power from the British to Indians. It was the dawn. तपोभूमि हर ग्राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी कहे जाने वाले अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी चौंकाया है। वर्तमान समय में शैक्षिक ढांचे के मामले में भारत 50 देशों में दूसरे स्थान पर है। स्वतंत्रता के इन 77 सालों में हमने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का, या चाहे वह अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र ही क्यों ना हो। It is important to remember that the responsibilities to uphold the values of our nation rests on our shoulders. As students, our contribution to the nation may seem small, but it is significant. By excelling in our studies, being disciplined and respecting others, we are laying the foundation of a strong and prosperous India. Remember, our education is not just about our personal success only, it is about the betterment of our nation too. Let's not forget that the freedom we enjoy today is not just a gift or a privilege. Yes, but a hard-earned privilege. And it's a challenge to live up to the ideals that our nation was founded upon. We have come a long way, but the journey is far from over. There are still battles to be fought, not against the foreign oppressors, but against injustice, corruption, and ignorance. These are the new frontiers of a freedom struggle. At last, on this special day, let us pledge to be the torchbearers of change and to carry forward the legacy for those who fought for a nation that is our forefathers, and to build a nation that the future generation will be proud of. गूंज रहा दुनिया में भारत का नगारा, गूंज रहा दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आओ मिलके करे दुआ की, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। जय हिंद, जय भारत। Thank you. Experience, achievements and growth of the community it represents. On this momentous occasion, entire DAV Kusunda fraternity is elated to introduce our inaugural reflexive journal, our school's first ever newsletter, Spectrum. Accomplishments of our student and celebrating the vibrant community we are so proud of. We extend our big thanks to the dedicated team behind Spectrum for their unflagging efforts in realizing this vision. Our special reverence and gratitude goes to our Honorable Principal Ma'am, whose guidance and blessings have been the guiding source in beginning Spectrum into realization. We now cordially invite our esteemed Chief Guest, Honorable Mrs. Ajanta Das Ma'am, to
to graciously unveil Spectrum with her cherished hand. I would also request our Honorable Principal Ma'am to escort our esteemed chief guest for the unveiling. Promise to provide similar spectrum in the years to come. Teacher, guardian, and all my media and all my students. आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे में हम एकत्रित हुए हैं। हम लोग आज के दिन में स्वाधीन भारत मिले हैं, हम लोग स्वाधीन हुए हैं। अच्छा लग रहा है हम लोग को इस स्कूल में आके मेरा पॉजिटिव वाइब आता है, इतना अच्छा लगता है। सब टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल में इतना कोऑपरेट है, बहुत अच्छा लगा है। लोग इतना सुंदर इन लोग परफॉर्मेंस किए, मेरा बचपन का याद आ गया। आज इतना मेहनत करना पड़ता है इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चे लोगों को सिखाने में के लिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। बच्चा लोग, आप लोग हम लोगों का भविष्य हो, फ्यूचर हो। आप ही लोगों में कोई IAS ऑफिसर बनेंगे, कोई टीचर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे। आप लोग ही हम लोगों का फ्यूचर है। आगे बढ़ो, आप लोग बहुत आगे करो। अब देखो, ये स्कूल में प्रिंसिपल मैम आपका माँ जैसे है। माँ जैसे किसी को, माँ जैसे बच्चे लोगों को बस कुछ नहीं मांगते, सिर्फ मांगते हैं जो तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा सा नाम रोशन करो। स्कूल का भी आप लोगों को एक मकाम तक पहुँचो, अपना एम टारगेट करके अभी चलो। जो हमको बनना है तो बनना है। आप लोग डेडिकेशन लेके पढ़ो। आप लोग सोच रहे होगे जो मैम आके फिर ऐसे बोलेगी जो पढ़ाई करो। ये नहीं है बेटा, आप लोग अच्छे से मन लगा के जो भी करो। ऐसा नहीं है जो डॉक्टर इंजीनियर बनना, जो आप लोगों का पेशेंस है, जो आप लोगों का मन होता है वही मैं डेडिकेशन दूँ। तो मन लगा के जो बनना है तो बनना है, ऐसे डेडिकेशन लाओ आप लोग। और नाम, झारखंड का भी नाम रोशन करो, अपना स्कूल का भी नाम रोशन करो। आप लोग आप लगता है होगा जो हाँ क्या बोली होता है, अपना स्कूल के लिए, अपना टीचर के लिए, अपना प्रिंसिपल के लिए बहुत गर्व महसूस होता है। जब कुछ बन जाओगे ना, फिर कभी मिलोगे टीचर लोगों से, प्रिंसिपल मैम से, सब से, तब गर्व महसूस होता है हम इस स्कूल से हम पढ़े हैं। इस बहुत अच्छा लगता है। तब तुम लोगों को सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करता है। जैसे प्रिंसिपल मैम में हर बात में तुम लोगों को सपोर्ट करता है। माँ बाप भी इसे सपोर्ट करो, ठीक आगे जो भी बनो, लेकिन इंसान बनो पहले। अच्छे से आप लोग अपना इंसान बनो। सब वो तो होते रहेगा, बाकी सब तो होगा, लेकिन इंसान पहले बनना चाहिए। वेरी थैंक यू, सबको थैंक यू। Now I request my revered principal ma'am to Students, give a big hand of applause. In the corner of the lips, thinking generation would held their head high
बर्ची डाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, उसकी यही सहेली थी। It's none other than झांसी की रानी. Her name is enough to lit the fire of patriotism in every breathing heart. Let's have a glimpse of Manu, the great soul who chanted the entire India with her eternal words. मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी. I welcome my friends for their grand performance. अंग्रेजों ने बुरी नजर डाली, तभी कहीं दूर एक छोटी सी यही मणिकर्णिका आगे चलकर बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने चटाया अंग्रेजों को धूल। सुनी कहानी थी हो लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान जाति जान का वो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार
नारियां हैं रानी लक्ष्मीबाई और इन सभी नारियों को शत शत नमन। हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये जहां अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये जहां, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। Give a big hand to such legendary performance. Really, on the stage for the vote of thanks. A warm thank you to all the parents, guardians, and guests who joined us today. Sir, your presence means a lot to us, and your support is required for success of our students and our schools.